Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from Krishnanagar, All India Trinamool Congress. Our Honorable Prime Minister has left yet again on another very long foreign tour. Few questions for the Honorable Prime Minister, for the globe-trotting Prime Minister. Mr. Prime Minister, you've probably been the one Prime Minister who's travelled the most on taxpayers' money, apparently sort of, cementing India in the global world order and making sure that we are in prime position. A few questions. How is it that after all your diplomatic outreach and after all of India's efforts, that today the leader of the free world is openly professing love for what is known as a terror hub, is having meals with its army chief, and worst of all, India and Pakistan have been hyphenated together, something that was unthinkable even 10 years ago. Today, the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan are being spoken of in the same breath. How is it, after all your efforts, Mr. Prime Minister, and after the efforts of our External Affairs Ministry, after all diplomatic efforts, we have been unable to diplomatically isolate Pakistan? How come no country has come out and openly said anything against Pakistan post the Pahalgam attacks? We have been unable to show to anybody any direct link between Pakistan and the Pahalgam attacks. Is that not a failure of intelligence on our part? And is that not a failure of demonstrating that there is a link between the two so people can get convinced? We also see that this Operation Sindoor that was carried out with much fanfare, in which 140 crore Indians, including all opposition parties, backed you 100%, came to a ceasefire with the President of the United States announcing this. Was the operation a success? Was the operation a failure? At what timing was it decided that a ceasefire would be called, and at whose decision was this? The last thing is that today, multilateral organizations like the World Bank, like the IMF, are bailing out Pakistan with billions of dollars in the face of them doing what they have to India. We have either been completely unable to convince them, or Pakistan's just done a better job than we have. Lastly, you're using taxpayers' money to make another trip. We've spent, over 1 lakh crores on the External Affairs Ministry budget. Where has it got us? Even at the Shanghai Cooperation, at the SCO meeting, we were unable to get in the final resolution a line which said that Pakistan was being denigrated for these attacks. We were unable to get them, and yet Balochistan found a mention. With this kind of colossal failure of foreign policy, with this kind of colossal failure of diplomacy, is this foreign tour at taxpayers' money going to help us get anywhere in the global order? These are a few questions that you must answer, Mr. Prime Minister. Thank you. 71 दिन हो गए हैं वो 22 अप्रैल की पहलगांव की वो घिनौनी आतंकवादियों की जो आक्रमण और 26 जन भारतीय पर्यटक की खून हत्या। प्रधानमंत्री जी, आप 5 राष्ट्र के दौरे पे निकलने वाले हैं आज से लेकर 9 तारीख तक, लेकिन 5 सवाल जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हमारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय आपसे 5 सवाल किए थे। इन 5 सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला। आतंकवादी कौन थे, कैसे आए भारत के भी अंदर, कैसे क्यों उन्होंने इस तरीके की हत्या की, वो कहां गुम हो गए, उनको हम लोग पकड़े हैं कि नहीं, वो जो भारतीय आक्रमण हुई ऑपरेशन द्वारा, इसमें उनकी मृत्यु हुई कि नहीं। इस घिनौनी आक्रमण और इस तरीके की वेदनादायक जो प्राण चले गए हमारे भारतीयों का, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा क्यों है कि भारत की सरकार या खुफिया एजेंसी को इस खबर की इत्तला नहीं थी? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अभिषेक बंदोपाध्याय ने जो किया। और आप तो कहते हैं आप विश्वगुरु हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतवर्ष की जो लड़ाई एक हमारी निकटतम राष्ट्र के विरुद्ध, जो राष्ट्र इस आतंकवादियों को और आतंकवाद को संस्थागत रूप दे चुका है, क्यों वो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समर्थन देती है, आर्थिक समर्थन, IMF उनको लोन देती है, वर्ल्ड बैंक उनको पैसे देती है। तो प्रधानमंत्री जी, आप तो विश्व गुरु हैं,
आपके विश्व गुरु होते हुए भू राजनीतिक जो आपकी प्रभाव है वो कम हो रही है क्या? और चूंकि आप दौरे पे जा रहे हैं तो इन सवालों का जवाब तो आपको पूछना ही है कि इस आतंकवादियों को समर्थन करने वाले एक राष्ट्र को क्यों अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है? यह सवाल तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। भारतवर्ष आपके इन सवालों का जवाब क्या देती है इसके लिए प्रतीक्षा कर रही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के 5 सवालों का आप जवाब दें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इन बातों को आप तक पहुंचाने की यह कोशिश कर रही है।